नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। तो कल के सेशन में अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखा गया था। तो आज जानते हैं कि हमारे मार्केट्स में ट्रेंड कैसा रह सकता है, द की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर इन ट्रेड टुडे एज वेल एज द मेन सेक्टर्स विच आर लाइकली टू आउट परफॉर्म इन दी शॉर्ट टर्म। तो पहले यूएस मार्केट्स के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट्स में एक शार्प पुल बैक देखा गया था। All the three major indices closed in the red. The Nasdaq witnessed the sharpest cut, down 1.37%, while the Dow and the S&P 500 corrected 0.76 and 0.75% respectively. दोनों इंडाइसेस में डाउ और S&P 500 में एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट, जो दर्शा रहा है कि आगे जाके भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर रह सकता है। S&P 500 के लिए इमीडिएट जोन जो रहेगा दैट इज़ 5770 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे देर कुड बी अ फर्दर करेक्शन टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 5640 इन दी शॉर्ट टर्म। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो देर हैज़ बीन अ शार्प डिक्लाइन इन क्रूड प्राइसेस इन द पास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस, और हमारा व्यू है कि देर कुड बी अ फर्दर करेक्शन विद द क्रूड ऑयल प्राइसेस करेक्टिंग टुवर्ड्स $71 अ बैरल। डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रेजिस्टेंस देखा जा रहा है क्लोजर टुवर्ड्स इट्स 200 EMA. Second consecutive session the index has faced pressure towards these levels. Going ahead, the 200 EMA zone, that is the levels of 103.30 103.40 will act as the immediate hurdle for DXY. Coming back to our markets, so the benchmark index Nifty has been fluctuating in a tight range, that is between 25,234 on the upside and 24,920 on the downside. From the last 5 trading sessions, we are witnessing that Nifty has been trading in this particular range. In trade yesterday, the index opened on a positive note but failed to sustain at the higher levels, witnessing selling pressure and ultimately closing the day at 25,057 levels with a modest decline of 0.28%. Going ahead for Nifty, the zone of 25,150 will act as the immediate hurdle. Any extension about 25,150 will lead to an extension towards 25,250. On the downside, the support is seen closer towards 24,880 levels. अगर ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करें तो 25,100 और 25,200 स्ट्राइक में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग देखा जा रहा है, वाइल पुट साइड पे मेन जो ऑप्शन राइटिंग हो रहा है वो 25,000 के स्ट्राइक में और 24,900 के स्ट्राइक में देखा जा रहा है। अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में डिस्कस किए, जो वीकली पीसीआर है दैट करंटली स्टैंड्स एट 0.56, जो क्लियरली दर्शा रहा है कि देर इज फर्दर बेरिशनेस विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स बिकॉज देर इज हायर कॉल राइटिंग इन द सिस्टम इन कंपेरिजन टू पुट राइटिंग. Coming to the update regarding Bank Nifty. So in trade yesterday, if you see, Bank Nifty traded in an extremely narrow range of 323 points. It was the smallest daily movement in the last 18 trading sessions. Despite this tight range, it continued to outperform the frontline indices, and currently the index is hovering near its 20-day EMA level. Going ahead, the 20-day EMA zone, that is 52,100, will act as the immediate hurdle for the index. Any sustainable move above the levels of 52,100 would lead to an upside towards 52,500 followed by 52,900 levels. On the downside, the immediate support is seen closer towards 51,600. अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में डिस्कस करें तो 52,000 as well as 52,500 has decent amount of call writing, while on the put side it is mainly seen in 51,700 and 51,500 strike. Bank Nifty, that is today's expiry, PCR currently stands at 0.9, while for the monthly expiry the PCR currently stands at 0.92. Coming to the key market indicators, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो रिलेटिवली फ्लैट ही रहा डिस्पाइट द चॉपी मूवमेंट विच वाज सीन इन द मार्केट. Coming to the key sectors in focus, so Nifty small cap index has been strongly outperforming the frontline indices since the last couple of trading sessions. It is also sustaining above its crucial short term and long term moving averages. Most noteworthy, the daily RSI has given a bullish crossover. Hence we believe it is likely to outperform in the short term. दूसरे जो सेक्टर्स रिलेटिवली जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो निफ्टी रियलिटी है. निफ्टी रियलिटी हैज सर्ज्ड अबव इट्स 20 and 50-day EMA levels on Tuesday, and going ahead, any sustainable move above the levels of 1090
would lead to a sharp rally in the realty sector. On the flip side, Nifty metal में selling pressure देखा जा रहा है. The index has slipped below its 20-day EMA level and the daily RSI has given a bearish crossover. Hence, we recommend to avoid the metal space for the immediate short term. Coming to the update regarding the FII DI data, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने कैश मार्केट में सेल किया टू द ट्यून ऑफ 1748 करोड़, while DIIs ने परचेज किया टू द ट्यून ऑफ 1654 करोड़. That's a wrap of today's edition of the podcast. Thank you for regularly tuning in. Do tune in tomorrow for more market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.